No drop shipping, no freelancing. Today I'm going to talk about very unique and unconventional ways जिससे आप actually genuinely side income as a student earn कर सकते हैं. I'm not here to just gain subscribers and views for my videos, but I'm going to give you very authentic ways जिससे आप genuinely earn कर सकते हैं about to 1 lakh per month being in college. Hi everyone, welcome back to Success Chronicle. If you're tired of hearing the same old advice about making money, then you're at the right place. We have got 15 unconventional side hustles that can help you earn rupees 1 lakh per month while you're still in school. These ideas are so practical, exciting, and perfect for fitting into your student life. So let's dive right in. Number 1, sell your notes. This is a way that is so genuine that if you like making notes, then this is the perfect platform for you to earn money. There are so many students जो एक point तक consistency maintain नहीं कर सकते हैं to make the notes. They initially make the notes, but then the consistency breaks. But if you are someone who can consistently make notes, so there's a platform like Nexus Notes. You can upload all the notes there, and whenever any student will download the notes, they have to pay you to further download it. So this is very genuine. If you are in school or college, you can sell your notes and consistent. The only thing required here is to make the notes consistently. Number 2, content creation. I cannot elaborate enough. Content creation in 2024 is so lucrative, rewarding career. Content creation can be on YouTube, Instagram, or any platform, but you can earn so much from this platform. You can earn so much from the platform using ads or sponsorship. And for this, not only helps you earn money, but it creates your own personal brand. So I think content creation will be so suitable for some who are very comfortable towards the camera. Third, tutoring. अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं तो ट्यूटोरिंग एक हाईली रिवॉर्डिंग साइड हसल हो सकता है. आप अपनी सर्विस फेलो स्टूडेंट्स, लोकल हाई स्कूल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जेग ट्यूटर्स पे भी यू कैन ऑफर. आप ना तो सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बट यू कैन एक्सपैंड योर नॉलेज. फोर्थ, सेल स्टूडेंट गेम टिकट्स. अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है और आप मार्केट डिमांड का अच्छा सेंस है, तो स्टूडेंट गेम टिकट्स बेचना एक प्रॉफिटेबल गिग हो सकता है. स्टूडेंट्स प्राइजेस पर टिकट खरीदो और उन्हें उन फैंस को रीसेल करो जो टिकट्स कभी टाइम पे नहीं खरीद पाते हैं. बस स्कूल के टिकट सेल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना मत भूलना. Number 5th is very fun. It's organizing a trip. Mostly students अपने college में या school में they usually get bored because of attending classes, coming back home, attending classes, coming back to hostel. So you can organize a trip. If you like planning and traveling, then you can organize a trip. You can collaborate with the travel agency, negotiate the price, conduct a trip. This will genuinely help you earn money. It will be so fun, so creative, and you will enhance your organizational skills. So the number 5th was organize a trip. Next is video editing. As the content creation concept is increasing, people are more eager to get the videos edited in such a way that it feels very cinematic and very real. So अगर आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं या you can learn the skill, then this will help you earn a very good income. Next, pet sitting और dog walking. अगर आप एनिमल से प्यार करते हैं तो पेट सेटिंग और डॉग वॉकिंग स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट साइड हसल है. This not only helps you connect to the nature, but it also helps you earn a good amount. Number 8, campus ambassador programs. कई कंपनीज कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स चाहती हैं जहाँ स्टूडेंट्स उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करें और बदले में यू कैन आस्क फॉर द पेमेंट्स, या फिर यू कैन गेट मार्केटिंग एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए. दिस इज़ अ वेरी गुड वे एंड यू कैन गेट सम अमाउंट ऑफ कैश एज वेल. रेंट आउट योर स्टफ. दिस इज़ वेरी ईजी thing to do. You can just rent out your stuff. Supposingly you have a car, you can just rent it out for a few hours. You can get a very good amount through that. There are so many
portals from which you can just buy the cars, and or you can buy any product and rent it. So this way also you can earn money. Number 10 is personalized merchandise. अगर आप में डिज़ाइन का फ्लेयर है तो पर्सनलाइज मर्चेंट जैसे टी शर्ट्स, मग्स या फ़ोन केसेस बनाएं. There are so many websites, you can upload your designs, people can buy it, and then this will help you earn money and express your creativity. Next one is language translation. Nowadays, because of this online culture, the language translation thing, the concept is very much required. If you like to learn new languages, or if you like to translate the languages, or you can use any AI tool, then this is the perfect one to get language. This will not only help you earn money but also help you improve the language proficiency. 12th one, इट्स इवेंट प्लानिंग. अगर आप ऑर्गेनाइज्ड है और इवेंट्स कोऑर्डिनेट करना पसंद है तो अपनी सर्विसेज एज एन इवेंट प्लानर ऑफर करें अपने कैंपस इवेंट्स, पार्टीज़ या छोटी वेडिंग्स के लिए. आप शुरू में फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं या ले सकते हैं, एंड धीरे धीरे कैन इंक्रीज योर क्लाइंट बेस. दिस विल help you gain a lot of money. Event planning is a very good source of getting a good amount of money. Lucrative, rewarding भी है, but it will also help you increase your networking. Number 13, resume and cover letter writing. कई स्टूडेंट्स इफेक्टिव रेज्यूमेज और कवर लेटर्स बनाने में स्ट्रगल करते हैं. दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब, दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रेज्यूमे विल बी सूटेबल फॉर पर्टिकुलर jobs or for particular colleges. You can help them out, you can learn this. It's not only कि आपको पहले आना चाहिए, you can go, there are so many platforms, YouTube है, or you can use Udemy. You can go wherever you want to learn the skills like resume and cover letter writing, and you can help students. This is also a very good way and very easy way. This will also help you increase your resume skills. Number 14 is tech support. अगर आप टेक में इंटरेस्टेड है एंड आपको टेक सपोर्ट सर्विसेज बहुत इजीली आप ऑफर कर सकते हैं, देन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू ऑफर योर फेलो फ्रेंड्स जो सॉफ्टवेयर में है या ट्रबल शूटिंग में उनको इशू आता है या एनी टेक स्किल्स दे रिक्वायर टू लर्न. यू कैन ऑलवेज हेल्प देम आउट. दिस इज़ नॉट ओनली, यू कैन ऑब्वियसली प्रोवाइड इट ऑफलाइन ऑल्सो, फिजिकल में भी यू कैन प्रोवाइड दिस, बट ऑनलाइन देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स दैट कैन हेल्प यू, where the students or the websites or the portals need the tech support, so you can always help them out. Number 15, sell handmade crafts. Being in college, you can use your creativity, make some handmade crafts, and you can sell it in the market. It can be jewelry, candles, handmade goods, or anything related to your hobby, which can be a very profitable side hustle. अगर ये 15 यूनिक और अनकन्वेंशनल साइड हसल्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो एंड हेल्प मी, प्रोवाइड मी सम सजेशंस दैट कैन हेल्प यू improve and help me improve too. Any innovative ways you require will help you out here. If you have any side hustle ideas and you want to learn more about it, do mention it in the comment section. I'll help you out with it. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आपको अगले वीडियो में कुछ भी चाहिए, एनी कंटेंट रिलेटेड टू द हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेसिफिक 15 methods, do comment below. We'll help you out with it. Thank you.